Morning, children. So now we are in last revision lecture of our first term, right? That is lecture number 18 of chapter 16. What is the title of the chapter? Climate. You are supposed to come on page number 121. Right? You come on page number 121 so that you can easily cope up with the chapter. Now see, we have done this chapter in regular lecture called 43, 44, 45, 46 and 47. In these 5 lectures, we have gone through each and every topic in detail along with graphical presentation. So here we will go in a nutshell. Nutshell means in a compact way. How all these things is connected to our lessons. Okay? Now first of all we will discuss about the main points which is presented over here. First topic is our climate. Second topic are factors affecting climate. Third topic seasons, that is called summer, winter, monsoon. Then we are supposed to study that topic which we know, retreating monsoon, and the impact of climate is connected to this topic. Okay? So we'll start with climate. Okay? Page number 121. Climate is an average of atmospheric condition over a long period. Right? Approximately 35 years. That you are also studied in 8th standard. In 9th, the same thing happens. If you want to derive a climate of a specific place, you are supposed to study the data of last 35 years. If you study the data of last 35 years, you will come to know the climate of that specific area and study. Generally, climate is determined from the weather, from the average weather condition of summer, winter and rainy season of a place around about 35 years. Underline this word. Approximately how many years? 35 years. वहाँ मार्क कर लो ताकि आपको परफेक्ट सॉल्व हो जाए. है समझो? In short, climate is the average of long-term atmospheric condition. This is climate. Okay. Now, seasonal changes. Revolution of the Earth around the Sun and her axial tilt are major reasons for seasons change. Why do seasons change? Because see, Earth is not exactly 90 degrees. It is little bit tilted. Right? If you take that Earth, right, it is not like this. Right? Suppose this is my Earth. This is equator. It is not like this. It is not like this. It is somewhat like this. Tilted. Right? It is having tilt direction. Right? And because of this tiltiness, there are causes of seasons. Is it clear? So because of this tilt, we are experiencing seasons, right? The axis of the Earth is tilted 23.5 degree. What is the tilt? 3.5 degree. That is the curve, the band of Earth. You see, on page number 121 map is given. And 120, which makes the angle of 66.5. If you calculate, this is 90. If you eliminate 23.5 from 90, answer will be 66.5. Right? With the orbit. Right? Seasons are caused due to this axial tilt. Why are seasons caused? Because Earth is tilted 23.5 degree, which makes the angle of 66.5. And because of this reason, of this tiltness, seasons are caused. This causes seasons.
Understood? Sun rays fall vertical over the tropic of Capricorn on 22nd December. There are some important dates. We are not going totally in detail, right? Sun rays are vertical on tropic of Capricorn on 22nd December. That is called southern hemisphere, right? In the northern hemisphere experiences winter. So it is clearly visible from equator. When southern hemisphere is having summer, in north it is winter. And when north is having summer, it is south winter. Okay? Nights are longer in India and colder in winter. वो तो हमको मालूम ही है. सर्दी में रात लंबी होती है, सर्द ज़्यादा होती है, इसीलिए तो हम सर्दी बोलते हैं उसको, कोल्ड विंटर बोलते हैं, right? Similarly, the sun rays are vertical over the Tropic of Cancer on 21st June. बराबर? 21st जून को वर्टिकल होते हैं. 21st जून से 22nd सितंबर तक दिन लंबा होता है और 22nd सितंबर से लेके 22nd दिसंबर तक दिन की आयुष छोटी हो जाती है. अभी आप हम सितंबर महीने में है, अब देखना 22nd सितंबर के बाद मान लो समर में 7 साढ़े 7 बजे तक उजाला रहता था, तो अभी 6 साढ़े 6 राइट 6:30 पौने 7 तक अंधेरा हो जाता है और विंटर में तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है. ऐसा समझ में days are becoming shorter. So rotation and revolution of the earth have different impact on food, clothing and residence of the man. हमारा व्यापार धंधा, हमारी खान पीन की आदत, सबके ऊपर हमारी रहने कहने, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा कल्चर, सबके ऊपर रोटेशन और रेवोल्यूशन की इफेक्ट होती है. क्योंकि हमको एनवायरमेंट के हिसाब से चलना, हमको क्लाइमेट के हिसाब से चलना होता है. क्लाइमेट हमारे में एडजस्ट नहीं होता, क्लाइमेट में हमको एडजस्ट करना पड़ता है. समर में क्या करना पड़ता है, विंटर में क्या करना है, मानसून में क्या करना पड़ता है, सब हमको एडजस्ट करना पड़ता है. ऐसे नाउ वेरिएशन क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. There are many variations in climates of India. South India is in a peninsular shape, hence is experienced moderate climate. As you know, South India has 3-side water, and the density, the heating capacity of water and land is quite different. Land gets heated faster, it cools down faster. Water gets heated slowly, it cools down slowly. And as South Indian Peninsula is surrounded with 3-side water, that is called Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. Water mass is more compared to land mass. So there is moderate climate, bearable climate. Right? While comparative to South India, in North India, there is no water mass nearby. A huge flat land in northern part of India, which is quite far away from water body, that is called water mass. Hence, North India experiences variation in climate. Because in North India, summers are extremely hot. Take for example the temperature of Delhi in summer goes to almost 45 degrees, while the same Delhi temperature in winter almost comes to 5 to 7 degrees. So there is huge difference, almost difference of 35 to 40 degrees in summer and winter. But the same difference is not found in Madras or any South Indian cities. Suppose take for example, the temperature in summer of Madras, that is called Chennai. Suppose say it is 30 degrees. Then the same temperature of Chennai in winter would be approximately 25 degrees. So you will find the variation of just hardly 5 to 7 degrees. You will not find that variation. As compared to
वेरिएशन देखने को मिलता है. Summers are extremely hot, winters are extremely cold. Why? Because North India is quite away from water body compared to South India. आया समझ में? मैं एक एक शब्द अलग अलग करके बोला हूँ, इसीलिए आपके दिमाग में आ जाए, घुस जाए. क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाटर बॉडी से काफी दूर है, तो इसीलिए उधर कौन सी क्लाइमेट होती है? तो कैसे उसको उसको उधर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है. समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट, विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और जहाँ समर हॉट नहीं होती, विंटर कोल्ड नहीं होती, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट. है समझ में? So this was the story of our climate. Now we will switch on to another topic that is called factors affecting climate. Right? On your page. There are 4 factors which affect the climate. Factor number 1, latitude. You know what is meant by latitude and what is meant by longitude. Latitude shows height. As height is more, climate is bearable, soft, cold. And height is less compared to sea level, climate is unbearable. Okay? There are some factors on the surface of Earth which control the distribution of amount of elements of climate. They are called climatic factors. उसमें से factor number 1, latitude. Right? Page number 122 पे दिया गया है, आप देखो. Climate type of the surface of the earth changes according to latitude and place concerned. एक लैटिट्यूड पे क्लाइमेट चेंज होते हैं, और एक लैटिट्यूड और दूसरे लैटिट्यूड की जगह अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स की होती है. टोटल अर्थ का हम डिस्टेंस क्या कहते हैं, उसमें से लैटिट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं, तो वो उसके हिसाब से 2 लैटिट्यूड की बीच की जगह 111 किलोमीटर्स तक की होती है. Right? The difference between 2 latitude is 111 kilometers. Okay, children. So there is a distance about 111 kilometers between 2 successive latitudes. Sun rays fall vertically over equatorial region. Hence, it is very hot throughout the summer. क्योंकि इक्वेटर है, उधर तो 12 महीना सनरेज वर्टिकल, वैसे वर्टिकली होते हैं, और वर्टिकल सनरेज की वजह से इक्वेटर में जो कंट्री आती है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती है, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, बराबर, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है कैप्रिकॉर्न. तो इधर जो कंट्रीज आती है उस पे सनरेज पूरे साल वर्टिकल होते हैं, और ये वर्टिकल की नेस की वजह से ये सारे कंट्रीज दे आर फेसिंग हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यू विल फेस सनरेज वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकलनेस climate is, you can say, of the, you can say, hot nature throughout the year, right? Sun rays falls vertical over equatorial region, hence it is very hot throughout the year. India is divided into 2 zones: torrid zone and temperate zone. Torrid means hot zone, that is for North India, and temperate zone means South India. Now, distance from the sea, second point. The distance of landmass from sea is another important factor affecting climate. Right? Water and land have different capacity to absorb. और वो मैंने आपको समझाया था अभी 2 मिनट पहले, वो वापस आता है, वो टॉपिक को आप देख लेना. Water and land have different capacity to absorb and release the solar heat. As much. As a result, coastal region experiences temperate climate, while climate becomes continental in the interior places away from the sea coast. The पानी की नजीक, सी वाटर बॉडी की नजीक वाली जगह में मॉडरेट क्लाइमेट होता है,
बेरेबल क्लाइमेट होता है, और जो जगह पानी से, वाटर बॉडी से दूर है, उधर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ऐसा कुछ टेक फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई in India is temperate as it is near to sea coast, while it is continental at Nagpur or Delhi, as these places are situated far away from sea. So the impact of water body is clearly seen on climate. Right? Now third, altitude, local height, जिसको बोलते हैं altitude. Right? As we go higher in the temperature atmosphere from sea level, air pressure and air temperature decreases. वो तो आपको मालूम है, आप प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़े हो, mountaineers carry oxygen cylinder with them because when they are climbing high mountain ranges, they face the problem of thin air, and because of thin air, they are supposed to carry oxygen cylinders with them, right? See, air pressure, air temperature decreases, while higher relief gets more rainfall because of mountain ranges. They can attract clouds, humidity is more. Due to high altitude, the Himalayan peaks remain snow covered throughout the year. Extreme ऊंचे एल्टीट्यूड में तो पूरे साल बर्फ गिरती है, इसीलिए जो हिमालय की सबसे बड़ी चोटियां है, जो 7000 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा है, कई सारी थर्ड रेंज की हिमालय की चोटियां हैं, वो पूरे साल स्नो कवर्ड रहती है। ऐसा समझ में, moist air cools down when rises, it gives rain. That is the phenomenon of rain that you know in 5th standard, 6th standard geography. With increasing altitude of the mountains in Meghalaya, the rainfall decreases. Increases, right? Because Meghalaya is dense forest, right? Ending range of Himalayas, eastern Himalayas जिसको हम बोलते हैं, वो मेघालय में है। तो ये सब की वजह से उधर रेनफॉल की मात्रा ज़्यादा हो रही है। जिसमें हमने पढ़ा है, चेरापूंजी का हमने पढ़ा है, मैनिस्मरम का हमने पढ़ा है, बराबर? उधर बहुत हीट होती है, राइट? और बारिश भी खूब होती है। ऐसे in general, air temperature decreases 1 degree centigrade from, as we said, 165 meters or 6.5 degree at 1000 meters. बेस से हम 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री का डिफरेंस आता है। और इसी वजह से आप समर में देख लो, ज़्यादातर लोग हिल स्टेशन विजिट करते हैं, क्योंकि जो लैंड का टेम्परेचर होता है उससे कई गुना सॉफ्ट टेम्परेचर, बेरेबल टेम्परेचर हिल स्टेशन पे होता है। आप लोग देखो, समर के वेकेशन में लोग दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिली एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है, और इसकी वजह से उधर समर का टेम्परेचर कम होता है, और यही कारण लोग हिल स्टेशन पे समर में जाते हैं, क्योंकि every 1000 meters there is fall of 6.5 degree temperature. 1000 मीटर आप ऊपर जाओ तो उसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की घट आएगी। मतलब मान लो बेस का टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री है, तो 1200 मीटर की ऊंचाई पे आप बैठे हो तो उधर टेम्परेचर 30 डिग्री होगा, उसमें डिफरेंस आ गया। तो 10 डिग्री का जो डिफरेंस आया है, वो 10 डिग्री का डिफरेंस किसके लिए आया है? वो हाइट के लिए, अल्टीट्यूड के लिए आया है। एक बात समझ लेना, पर 100 मीटर there is 165 meter, there is 1 degree change. So if you multiply 165 approximately divided by 1000, you will find the answer 6.5. एग्जैक्ट 6.5 नहीं होते, लेकिन 6 से 7 डिग्री का डिफरेंस जरूर आता है 1000 मीटर की ऊंचाई, राइट? यस, every 1000 मीटर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में वाटर मास ज़्यादा है,
विंड ओशन पे से उठती है और उसका एक प्रेशर पॉकेट उसने बनाया है, कौन से इलाके में वो घूमती है, और उसकी वजह से रेनफॉल, स्टॉर्म्स, ऐसे कुछ सब बनते हैं, राइट? सो लेट अस से दैट इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जो बर्फीली सर्दी वाली हवाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में, साइबेरिया में से ओरिजिनेट होके हिमालय, चाइना क्रॉस करके हिमालय में एंटर होती है, फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में से अरेबियन सी में जाती है। These winds are very cold, that we call wintry winds. It settles in Arabian Sea, it gets humidity collected, and once again it becomes anti-trade winds and bringing rainfall in south of India. जो सूखी winds होती है नॉर्थ में से आती है, वो साउथ में होके ह्यूमिडिटी वाली बन जाती है, और वही ह्यूमिड विंड हमारे लिए हर साल बारिश लाती है जब वापस जाती है तब, राइट? These winds originate due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. These winds deflect due to coronal forces. Coronal means internal forces throughout the year. Moist air cools down when it rises and gives rain. Right? In the past, all this thing has happened. Right? This trade wind deflect due to coronal forces at equator. These winds are utilized for oceanic trade, so they are called trade winds. क्योंकि उसका बहाव पानी से जमीन की तरफ का होता है, और वो उस समय की जहाज, जो लकड़ी के जहाज थे, जहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त व्यापारी जहाज को दिशा बताती थी, ताकि कोई भी जहाज किसी भी बड़े समंदर में क्यों ना हो, उसकी दिशा लैंड की तरफ होती है, पोर्ट की तरफ होती है, और इसीलिए ये विंड्स को हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। आया समझ में? As these winds blow over land mass, they contain more moisture, less moisture. The Indian Ocean is located to the south of India. Arabian Sea lies to the west of Bay of Bengal to the east of India. Due to this vast water mass, the wind passing over absorb moisture and bring rain to India. तो एक बार जो एंटी ट्रेड विंड्स बनती है वो आज जाके ट्रेड विंड्स बनती है, और यही ट्रेड विंड्स जब वाटर मास पे सेटल होती है, जब वाटर मास के ऊपर से गुजरती है, तब उसमें ह्यूमिडिटी कलेक्ट होती है, और यही ह्यूमिडिटी की वजह से वो रेनफॉल लाती है। है समझ में? Good. During winter, high pressure develops over north of Himalayas. Cold and dry winds from the region blow over oceanic areas where low pressure is created. During summer, low pressure develops due to high temperature over Central Asia and Indian landmass. At this time, high pressure prevails over North Indian and South India. So, the wind tends to blow towards high pressure pocket over Indian Ocean, where low pressure is generated. These winds are called southwest monsoon winds, which contain moisture and brings rain to India. तो ये जो स्टोरी हुई, वो स्टोरी हुई फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट की। है समझ में? ये हमने दो टॉपिक किए, मतलब व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। हम सीजन की बात करेंगे। पेज नंबर 123 पे आप आ जाओ। वेदर इन आवर कंट्री रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरी 2 months। एक्चुअली हम 3 सीजन बोलते हैं, लेकिन दरअसल 6 सीजन है, बराबर। These 2 months are called durations of seasons। एक सीजन के दरअसल 4 महीने होते हैं, 2-2 महीने के सीजन का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव सीजन का शुरुआत का पड़ाव होता है, दूसरा पड़ाव सीजन्स का एक्सट्रीमिटी का पड़ाव होता है। आया समझ में? As per the tradition of 6 seasons in India, there are Hemant, Shishir, Vasant, Grishma, Vasha and Sharad। Sharad means winter, final season। तो ये हमारे विक्रम संवत की कैलेंडर के हिसाब से ये 6 सीजन्स बताए जाते हैं। 2 महीने की एक सीजन होती है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बेसिकली कौन सी सीजन होती है।
वो होती है हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। शरद मतलब विंटर। There is hardly any noticeable difference in the seasons between two successive seasons. आहिस्ता आहिस्ता बारिश शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता विंटर शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी शुरू होती है। अचानक ऐसे सीजन नहीं बदलाव आता है कि चलो आज बारिश का महीना खत्म हो गए, कल से औचित्य कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी, आज सर्दी खत्म हो गई, कल से औचित्य धूप शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता सीजन चेंज होता है। हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे सीजन बदल गया और कैसे एक सीजन आके दूसरा सीजन चला गया। है समझ में? So if two seasons are taken simultaneously, there are only 3 seasons in a year. 6 को 2 से आप डिवाइड कर दो तो 3 हो गए, तो 3 सीजन बन गए। There is cold season, hot season and rainy season. है समझ में? Season changes in season experienced distinctly in India. Cold weather starts from the beginning of winter. Temperature gradually increases during summer. With the onset of monsoon, it brings rain. वो तो सबको मालूम है। विंटर में कड़ाके की सर्दी होती है, समर में भयंकर गर्मी होती है और मानसून में बारिश होती है। वो तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से सीख के आते हो, है समझ? So that is the cycle of season. Now we'll talk about winter season, right? Specific winter कब का है? विंटर सीजन ऐसे तो अक्टूबर से शुरू हो जाती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी कब हमको देखने को मिलती है? दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी। In India, the 3 months duration of February to December to February is considered as a winter. इसमें 3 महीने दिए, लेकिन कड़ाके की सर्दी के मंथ 2 ही है, दिसंबर जनवरी। फरवरी में थोड़ी कम हो जाती है। Sun shines vertically over southern hemisphere between 22nd September to 21st March. और उसके हिसाब से जब सन साउथ में होता है तब हमारे नॉर्थ में उसके सनरेज स्लांटिंग नहीं होते, सॉरी वर्टिकल नहीं होते, स्लांटिंग होते हैं। और स्लांटिंग की वजह से टेम्परेचर नीचे आ जाता है, मतलब सर्दी शुरू होती है, राइट? विंटर शुरू होती है। So it is under influence of slanting surface. Between December to February, the low temperature prevails, right? Winds blow from the northeast direction to Central Asia, from Central Asia, which is called cold Siberian winds, right? These winds are dry and cold, so the weather remains dry and cold. The sky is clear during this time, क्योंकि सर्दी में आपको मालूम है आकाश बिल्कुल साफ होता है, बराबर? सर्दी कड़ाके की बने कोई बार मावठा हो जाता है, राइट? उसको टेम्परेचर का दिया है, अभी आप नीचे आ जाओ। कंडीशन इन साउथ इंडिया इन विंटर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैंने बोला साउथ इंडिया के पास पेनिनसुलर लोकेशन है साउथ इंडिया का, और इसीलिए साउथ इंडिया में सर्दी का असर कम होता है, क्योंकि उसको मैरीटाइम क्लाइमेट मिलता है। 3 साइड ओशनिक मास है और 1 साइड लैंड मास है, तो इसकी वजह से उसको पूरा फायदा मिलता है, राइट? तो देखते हैं कैसे। The interior area is not hot, not very far away from sea coast, so the area does not feel severe cold as compared to northern India during winter. कि नॉर्थ के तो सारे एरिया काफी दूर है और उससे उधर तो सीवियर विंटर होती है, राइट? There is no snowfall. Temperature does not go down very low. Example, temperature in Kochi during January is 26 degrees, Madura is 25, Chennai is 24, but the mountains region of South India feels low temperature. Ooty और वो सब है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के अंदरूनी हिस्से जो हाइट पे है, और मैंने अभी आपको बताया कि हाइट पे जो प्लेसेस है उसके टेम्परेचर में 12 महीना गिरावट आती है। जैसे आप 1000 मीटर ऊपर जाओ तो 6-7 डिग्री का तो आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा समझो।
In India, winter is considered to be very pleasant and healthy season. Due to longer and cooler nights, due to fog are common in early morning, days is shorter and nights are longer. In winter, dry winds coming from landmass generally does not bring rain, but North India coming under Bay of Bengal contain humidity. So this winds gives rainfall in Coromandel coast. वो हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे हम रोटेटिंग मानसून वीक में, बराबर है? तो ये फिनोमिना विंटर का होता है। फिर हम चलते हैं समर में, बराबर है? In India, the warm and dry season starts from March to May. It is called summer. During this period, the sun rays fall vertically, shifting from south to north gradually, and the landmass becomes warmer. क्योंकि उसमें उस वक्त साउथ में सर्दियाँ शुरू हो गई होती, इसीलिए इधर नॉर्थ में गर्मियाँ शुरू होती है। मैंने अभी आपको विंटर की पोजीशन में बताया। Temperature increase continuously. The month of March is the hottest month in southern hemisphere. Right? Temperature exceeds 40 degrees at many places. Central and northwest India experiences maximum temperature during April and May. हमको मालूम है सबसे हॉट मंथ कौन सा है? अप्रैल और मई सबसे ज़्यादा हॉट मंथ होता है, right? At some places, temperature reaches about 45 degree to 50 degree. अंदरूनी हिस्से वाले भाग आप देखो, राजस्थान देखो, तो कितनी बड़ी उधर गर्मी होती है। राइट? श्रीगंगानगर में तो 50-52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। राइट? Due to altitude in peninsula and the plateau, the summer in south is mild. Compared to North India, the temperature remains low. While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 to 35 degrees, Madura is 27 or 30, Bangalore is 27 to 30. Why? Because of water impact, water body impact. Thus, physical features can be seen dominating the summer and the temperature of India in South India. North India से South India का temperature है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है। साउथ में कम गर्मी होती है, कम सर्दी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेनी सीजन का, राइट? कब रेनी सीजन शुरू होता है? पेज नंबर 125। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री, सो द रेनफॉल सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। About 80% of rainfall of India is received between June to September. इसीलिए तो जून और सितंबर को रेनी सीजन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश यही समय में आती है हमारे, इसीलिए तो बारिश का महीना बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं गुजराती में, राइट? Indian farmers are busy in farming from beginning of the rainy season. वो तो सब खेती बाड़ी करते हैं, उसको मालूम होते हैं कब बुनाई करनी है, कब प्लांटेशन करना होता है, तो सब उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। Southwest monsoon winds are responsible to bring the seasonal rain of humidity. That is why it is called monsoon climate or southwest monsoon wind. अभी हमारे इंडिया में दो करंट है, राइट? हमारे इंडिया में दो करंट है। मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इधर ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, तो इधर से करंट आ रहा है, बराबर? अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट, ये दो करंट होते हैं जो बारिश लाते हैं इंडिया में, ऐसा समझो। तो पहले हम पढ़ेंगे अरेबियन सी करंट। अरेबियन सी करंट वो मालूम हो गया।
Generally, monsoon in India starts in the beginning of June in Kerala, in South India. केरला से हमारा मानसून शुरू होता है. Western Ghats obstruct the southwest monsoon winds coming from Arabian Sea current, and the slopes receives heavy rainfall. इधर बारिश होती है क्योंकि इधर वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदरूनी हिस्से में, राइट, वेस्टर्न घाट्स के अंदरूनी हिस्से में कम बारिश है, इधर कोंकण पट्टी में ज्यादा बारिश होती है, राइट, बिकॉज इट इज wind direction of clouds, western Ghats. Right? मैंने सबको डिटेल में आपको पढ़ाया था उसको. Rainfall decrease. Mumbai receives more rainfall, while Pune receives less rainfall. मुंबई इधर है, पुणे इधर है, बीच में वेस्टर्न घाट्स है, और मुंबई में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, तो पुणे में वही बारिश 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है. पुणे में ज्यादा बारिश होती है, मुंबई में कम बारिश होती है, राइट. रेनफॉल डिक्रीज नॉर्थवर्ड एज वी गो फ्रॉम केरला टू कर्नाटक टू गोवा टू महाराष्ट्र एंड गुजरात. जैसे जैसे ऊपर आते हैं नीचे से, तब जाके रेनफॉल कम हो जाती है. सबसे ज्यादा बारिश साउथ में केरला में होती है, उससे कम कर्नाटक में होती है, उससे कम गोवा में होती है, मुंबई में होती है, उससे कम गुजरात में होती है, राइट. उसके हिसाब से कटाई बुनाई वैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स लेकर, किसी को ज़्यादा बारिश चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, राइट. तो इसके हिसाब से रेनफॉल आता है. वन ब्रांच एंटर्स मध्य प्रदेश टू नर्मदा वैली. दिस करंट मर्जेस फर्दर इन वेस्टर्न घाट. एक करंट इधर जाता है, बे ऑफ बंगाल के करंट से मर्ज होता है, और मध्य प्रदेश में जम के बारिश होती है. बीच साल आपने देखो, दोनों अरेबियन सी करंट और बे ऑफ बंगाल करंट मध्य प्रदेश पे टूट पड़े थे, और पिछले मंथ ऑफ अगस्त में आपने देखा नर्मदा में कितना पानी आया. नर्मदा डैम 135 मीटर तक भर गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बारिश हुई, बराबर. बहुत बारिश इस साल हुई, पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई, ताकि दोनों करंट इकट्ठे होते हैं, इसलिए, राइट. This current further merges with the winds coming from beyond Bengal. One branch of Arabian Sea passes through Gujarat, Saurashtra and Kutch. हमारे सौराष्ट्र में भी इस साल इधर कितनी बारिश हुई, जूनागढ़ में हो, इस साल का मानसून बढ़िया रहा है. आपने देखा ही है, अभी 2-4-5 दिन से थोड़े बादल कम हुए, आकाश दिखता है, वरना अगस्त का पूरा मंथ हमने देखा बारिश का महीना, राइट, एंड गोज टुवर्ड्स राजस्थान, राइट. So there is a decrease in rainfall. अभी हम पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल का करंट. Another branch from southwest monsoon winds filter first enters Bay of Bengal and reaches Meghalaya. This winds contains maximum moisture and gives heavy rainfall in Meghalaya. And the slope of Garo, Kasi, इधर जो गारो, काशी, जैंतिया हिल्स है, इधर चेरापूंजी का लोकेशन है, सबसे ज्यादा बारिश उधर होती है, बराबर है. As these winds deflect towards southeast, they cross Bay of Bengal, Bihar, UP, Punjab and reach Haryana. As they go upward, moisture decreases. This region receives less rainfall. Further, these both currents coming from Arabian Sea and Bay of Bengal receives massive rainfall in North India. एक बार करंट मध्य प्रदेश में अलग इकट्ठे होते, एक करंट नॉर्थ इंडिया में अलग इकट्ठे होते. इसकी वजह से दिल्ली के साथ ज़्यादा बारिश आती है, right? Sometimes it extends snowfall in Himalayan region. So ये हुआ Arabian Sea का. Now retreating monsoon winds. During October and November, it is called retreating monsoon. The vertical to sun rays gradually shift towards southwest and create low pressure over Indian Ocean. In south, high pressure develops gradually over North India. By the end of September, a fresh pressure develops over Arabian Sea and Bay of Bengal, which weakens the monsoon winds which have already reached the interior part of India. ये जो लो प्रेशर जनरेट होते हैं वो बारिश की वजह से नहीं होता है, मॉइस्चर वाली विंड्स की नहीं, सूखी हवा का लो प्रेशर होता है. और इसी वो सूखी हवा का लो प्रेशर जो बारिश की भेज वाली नमी वाली हवा होती है उसको अंदर खदेड़ देता है, उसको लहर ओशन मास तक नहीं पहुंचने देगा. तो इसकी वजह से जो नमी वाली हवा होती है
जो बारिश की हवा होती है वो उधर ही एम्प्टी हो जाती है, इसीलिए इधर ये जो हिस्सा है कोरोमंडल कोस्ट, ये वाला हिस्सा, राइट, कोरोमंडल कोरोमंडल कोस्ट, नवंबर दिसंबर में बारिश आती है उधर, राइट। When the pressure condition changes, it shifts upwards, flowing from October to November. So this period is called retreating monsoon rain period. Barabar? The sky is clear, the air is dry, season is favorable. These are the main characteristics of this season. आकाश बिल्कुल साफ हो गया होता है, ऐसे, बराबर है। डे टाइम वेदर इज परप्लेक्सिंग, जी अभी भाद्र मास चल रहा है, भाद्रवा महीना चल रहा है, तो भाद्रवा महीने में आप देखो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 35 डिग्री तक चला जाता है, एंजाइटी होता है, परप्लेक्सिंग होता है, पसीना छूट जाता है, शाम को ठंड मिल जाती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता विंटर की शुरुआत हो जाती है। Daytime temperature is very perplexing due to high temperature humidity. Situation is called Bhadravi heat, or in Gujarati it is called Bhadraviyo ताप। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी क्लाइमेट की। अभी लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट। The climate of India is a monsoon time. Irregularity and uncertainty are the characteristics profound on food, lifestyle, nature, people and agriculture. क्योंकि कई बार बारिश ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, वो तो कुदरत के अधीन है, तो उसके हिसाब से हमारा फेस्टिवल्स, हमारे व्यापार, हमारा फूड, हमारा क्लोथिंग, सब उसके हिसाब से होता है। Besides being an agricultural country, India is under the total control of monsoon climate. So the impact and the uncertainties of monsoon winds are seen on agriculture and human life in India. Right? So these are all the things which we have studied. तो हमारा क्लाइमेट का असर हमारे खान पीन पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे व्यापार धंधा पे, हमारे कल्चर पे, हमारे फेस्टिवल पे, सब में सीजन का इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये हमारा लेक्चर था 16 रिवीजन लेक्चर 18। तो इधर हम ऑफिशियली फर्स्ट टर्म का रिवीजन भी खत्म करते हैं। राइट, नाउ इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क। Right, or detailed note on factors affecting climate. Right? दूसरा वाला, right? A short note on retreating monsoon winds. पहला क्वेश्चन आप देख लो, राइट ए डिटेल नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, और दूसरा क्वेश्चन देखो आप, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स। ये दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क है, और इसकी साथ ही हम लेक्चर नंबर 18 रिवीजन का खत्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय चिल्ड्रन।